Hey guys, how's it going? My name is Aakash Singh. In this video, we'll be covering the conditional and iterative systems part. Now, in this unit, there are a couple of more things which you need to remember, like types of statements, statement flow control. उसके बाद हम लोग if statements देखेंगे, which is of multiple types, like if else, if elif, nested if. Now, इसके बाद हम लोग देखेंगे the for loops, the while loops, and the range function. So इस वीडियो में हम लोग ये सब थ्योरी तो कवर करेंगे, बट अलोंग विद दैट वी विल आल्सो लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. So for each of these topics there will be about one or two examples. So let's begin with this session because हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले इट विल बी इन वन शॉट. सो आई थिंक इट विल बी अ गुड रिविजन फॉर यू अगर आप एग्जाम्स देने वाले हो या फिर आपको सिर्फ अगर रिवाइज करना है अपने स्कूल के सिलेबस को. सो लेट्स बिगिन by taking a quick recap of the first chapter जहाँ पर हम लोगों ने devices के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था. So we had seen वहाँ पर कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है. So we understood कंट्रोल यूनिट, हम लोगों ने अरिथमेटिक यूनिट देख लिया था. फिर उसके बाद ये जो लॉजिक यूनिट था हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे. सो इन दिस चैप्टर whatever statements we cover, जो भी हम लोग थ्योरी कवर करने वाले हैं, that is a part of the logic unit as well as the control unit. तो जब भी हम लोग कोई पाइथन प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें आपको तीन टाइप की स्टेटमेंट्स मिलेंगी. द फर्स्ट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, सेकंड इज सिंपल स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट, द थर्ड इज कंपाउंड स्टेटमेंट. नाउ इफ एज द नेम सजेस्ट्स दिस वन इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट, इट डज नथिंग. सिंपल स्टेटमेंट मीन्स ये सिर्फ एक ही लाइन में होता है, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स इट इज मोर देन टू और मोर देन टू लाइन्स. So the first is empty statement, which means this statement does not actually do anything. अगर आप ये statement लिख दोगे, so Python will not interpret it. It will just move on to the next statement in the flow of control. Basically, ये statement तब use होती है जब आपको आपके प्रोग्राम को कुछ भी नहीं करवाना है. So one of the examples is the pass statement. अगर आप ये लिखोगे, Python will just skip this out and move on to the next one. इसके बाद आता है आपका सिंपल स्टेटमेंट. सो सिंपल स्टेटमेंट इज द मेजॉरिटी ऑफ योर पाइथन प्रोग्राम. आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखते हो लाइक दिस, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 7, मे बी c इज इक्वल टू a इंटू b. सो ऑल दीज आर एक्चुअली सिंगल स्टेटमेंट्स क्योंकि आप ये सब अलग अलग लिखते हो, राइट. अनदर एग्जाम्पल कुड बी यू आर इनपुटिंग द एज inside the age variable and you're just printing it out. So they are two single statements. So it is also known as a simple statement. इसके बाद आता है कंपाउंड स्टेटमेंट. एज वी सॉ इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज होती हैं. सो इसके जनरल एग्जांपल्स है इफ स्टेटमेंट्स, फॉर स्टेटमेंट्स, इफ एल स्टेटमेंट्स. सो लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल. नाउ वी सॉ कि पाइथन में तीन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स है. एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है और एक मल्टी लाइन स्टेटमेंट है. उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होती हैं, देयर आर थ्री वेज टू एग्जीक्यूट देम. फर्स्ट इज इन द सीरियल ऑर्डर, सेकेंड इज सेलेक्टिवली, एंड द थर्ड इज आइटरेटिवली. तो फर्स्ट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लाइक दिस. ए के बाद स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट होती है, बी के बाद स्टेटमेंट सी, उसके बाद स्टेटमेंट डी एंड सो ऑन. अगर आप देखोगे दिस इज अ लीनियर अप्रोच. यहाँ पर जो स्टेटमेंट का फ्लो है दैट फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट गो एनीवेयर एल्स. द सेकेंड इज सेलेक्टिव वन. सो इट लुक्स लाइक दिस. अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया उसके बाद आपके प्रोग्राम के पास दो ऑप्शंस आएंगे, आइदर टू गो टू स्टेटमेंट बी और गो टू स्टेटमेंट सी. दिस टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट इज नोन एज सेलेक्टिव स्टेटमेंट बिकॉज यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन ओवर देयर. यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन टू ऑप्शंस और मोर देन टू ऑप्शंस. एंड द नेक्स्ट इज द आइटरेटिव स्टेटमेंट. सो एज द नेम सजेस्ट आपको यहाँ पर आइटरेशंस करनी होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज लूप्स. सो इट विल लुक लाइक दिस. ए के बाद आपने बी लिखा, फिर हो सकता है इसके बाद अगेन ए, फिर इसके बाद अगेन बी, एंड दिस विल गो ऑन.
So these are the three types of flows which can happen in any Python program. First is आप लॉजिकल ऑर्डर में जाओगे, स्ट्रेट लाइन. सेकंड इज सेलेक्टिव, जहां पर आपको चॉइसेस होती हैं. एंड द थर्ड इज कि यू हैव टू डू रेपिटेशंस और लूप्स. सो इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज. So three types of control statements are, first is decision making, जहां पर आपको decisions करने होते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, ए के बाद बी जाना है या ए के बाद सी जाना है. सेकेंड इज द आइटरेशन स्टेटमेंट, जहां पर आपको रेपिटेशन करना पड़ता है. एंड द थर्ड वन इज जंप स्टेटमेंट. दे आर एक्चुअली लाइक योर चीट कोड्स, बिकॉज यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो. जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट्स यूज की, आपका पाइथन प्रोग्राम जो है वो ब्रेक कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है. सो दीज थ्री स्टेटमेंट्स विल बी कवर्ड टुडे. So the first one is the decision making statement, which is used to control the flow of execution. इसके एग्जाम्पल्स हैं. इफ स्टेटमेंट हो गया आपका इफ एल्स आता है, इसमें नेस्टेड इफ आता है. सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इट इज. सो इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पर आपको हमेशा एक कंडीशन देनी पड़ती है. If the condition is true, then a particular set of statements will be executed. If not, then something else will be executed. अगर आप इसका flow chart देखोगे तो it will look like this. Your program starts over here, then it encounters a condition. Now this condition can have true values. Each and every condition can only have two values. Either वो सच है या फिर गलत है. So if it's true, then it will execute this set of statements. If it's not true, then it will move on to a different path, जहां पर कोई भी और स्टेटमेंट नहीं है, and eventually the program will reach the end. So such type of statements are known as if statements. इसका जो syntax है, it is quite simple. सिर्फ दो लाइन होते हैं इसमें. If you have to write the condition and the statement. Taking an example, I want to create a program which will return the absolute value of any number. So absolute value का मतलब होता है you have to find out the magnitude of the number. अगर आपका नंबर 5 है तो इसकी absolute value होगी 5. अगर आपका नंबर है -4, इसकी absolute value होगी 4. So basically if you are studying for JEE right now, हम लोग इसको mod भी बोलते हैं. So let's see what this program does. Using the if statement हम लोग लिख रहे हैं a is equal to -10. Now in order to find the absolute value of 10, what we try to find out is, okay, so यहाँ पर जो variable है, let's make it age. If age is less than 0, then what we do, we multiply it by -1 so that आपको एक positive magnitude वाला number मिले. It's like saying each and every number which is less than 0 will be multiplied by -1 so that you get a positive value. So this is an example of an if statement. The if else statements are basically an extension of the if statement. जहाँ पर हम लोग if statement में सिर्फ एक ही type of statement execute कर रहे थे. In the if else statements we have two blocks. So again each condition will have two ways to go. One is the true and the other one is false. So if else में अगर true होता है तो one type of conditions will be executed. If it's false, then other type of conditions will be executed. So an example program would be like this. So let's say I have created a variable a equal to 10. Now if a is less than 100, you will print that the value of this number is less than 100. If not, then you will print it's more than or equal to 100. So in this scenario, what we see is there are two statements to be executed and only one of them will be executed according to the condition you have. Again, this condition can only be true or false and उसके according आपकी next statement execute हो जाती है. Other type of statements are the if elif statements. So इन type of statements को तब use किया जाता है जब आपके पास दो से ज़्यादा conditions हो. It's like saying
I want to choose between multiple numbers or multiple choices. So let's say I have the first condition. This is my first condition and I try to see if it's true. अगर ये condition true है, then I will execute a particular set of statements. But if it's false, it will move on to the next type of condition, जहाँ पर वो फिर से चेक करेगा कि अगर ये condition true है या नहीं. Similarly, it will go to the same path as before. And finally, last statement में either it can be true or it will just go on to the last part of the program. So if you want to understand this in a better way, let's move on to the next part where we take an example. So again मैंने यहाँ पर price रखी है 100. So what this program does is ये आपको बताता है कि आपकी exact price कितनी है. So if your price is greater than 100, it will tell you that the price is greater than 100. If it's equal to 100, then it will print the price is 100. If not, it will say the price is less than 100. So if you see, यहाँ पर दो conditions हैं जो हम लोग को देखनी है. And it's not necessary that you only take two conditions. You can always take more than two conditions just by adding another ELIF block. Next type of decision making statements is the nested if else statement, जहां पर आप if के अंदर दूसरे if else डालते हो. So in order to understand this, let's say I have a condition 1. Again, it can have two ways. Either it's true or it's false. अगर ये false है, then I will just execute a statement and it will move on to the end of the program. If it's true, then it encounters another condition. Now please remember, हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन आ रही थी. बट ओवर हियर यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है दैट इज इनसाइड ऑफ द फर्स्ट कंडीशन. So that is the reason it is called a nested if else statement, because it is nesting inside the statement. Taking an example, let's say I want to find out if a number is positive, negative or zero. So यहाँ पर the program would look like this. I'm checking if the value of num is greater than or equal to 0. So इसके लिए the else is the negative number, right? क्योंकि अगर value is less than 0, you can automatically print it's a negative number. If this condition is true, it moves inside this block and again checks if the value of num is equal to 0, then it will print 0. If not, then you can print it's a positive number. Taking an example, like let's say I have input 7. So it checks this condition, it comes out to be true. Then it moves inside. Is this condition true? It's not true. Then it will move on to the else part of this if and just print positive number. So this was about the decision making statements, जहाँ पर हम लोगों ने if else के बारे में देखा. So the next type of control flow statements are the iteration statements. So ये statements तब use की जाते हैं जब हमें एक कोड को बार बार repeat करना हो या फिर loop करना हो. These statements are of three types. First is the while loop, second is for loop, and third is the nested for loop. इन सारे statements के अलग अलग purpose हैं. So let's start off with the while loop first and see कि इसका मतलब क्या होता है. So while loop में आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि it has a condition associated with it. जब तक condition true है तब तक आपका जो loop है वो चलता रहेगा. And as soon as the condition becomes false, your control will come out of the loop. Basically, till the time this condition is true, it will repeat all the statements and जैसे ही वो condition false हुई वैसे ही आपका जो loop है वो end हो जाएगा. And the second thing which you need to remember is that condition is checked at the beginning or at the start of each loop. For example, अगर आपने while loop start किया तो with for each repetition आपकी condition check होगी, and after the first repetition is done, it will again check the condition and so on.
So let's see an example of the while loop. थोड़ा syntax देखते हैं हम लोग कि कैसा होता है. As we discussed कि while loop में condition होगी and till the time this condition is true, इसके अंदर वाली statements वो execute होने वाली हैं. Taking an example, let's say हम लोग while loop use कर रहे हैं जिसकी condition है x less than or equal to 4, which means till the time x की value is less than or equal to 4, the statements inside will be executed. So let's see how this works. सबसे पहले जो x की वैल्यू है मैंने 1 रखी है. So x की वैल्यू is 1. So this condition is true. It goes inside, it prints x. So ये आपका आउटपुट आया. Then x की वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाली है. So x becomes 2. Again it goes up and sees, is x equal to 2 less than equal to 4? Yes, it's true. Then again it prints true. x की वैल्यू चेंज होके 3 हो जाएगी. Then it again checks if the value of x is less than 4 or equal to 4. ऐसे करते करते आपके ये सब आउटपुट्स आ जाएंगे. So this while loop tells you that at the start of each iteration your condition will be checked. Now one thing to remember in while loop is that you always need to have a statement जिससे आपका कंडीशन इवेंचुअली फॉल्स हो जाए. अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन रखी है जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी, विच मीन्स यू विल एनकाउंटर एन इन्फिनाइट लूप एंड आपका जो लूप है कभी खत्म ही नहीं होगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर इन्फाइनाइट वाइल लूप. लेट्स से आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 5. फिर मैंने कंडीशन रखी टिल द टाइम x इज इक्वल टू 5 प्रिंट इनसाइड लूप. सो जस्ट टेक अ मोमेंट एंड अंडरस्टैंड, विल दिस लूप एवर एंड? यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा ही 5 रहने वाली है, विच मीन्स दिस विल बी प्रिंटेड इनफाइनाइट टाइम्स. बेसिकली इट विल गिव यू एन एरर. सो दैट वाज अबाउट व्हाइल लूप. लुकिंग एट फॉर लूप जनरली एक सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करता है. लेट्स से आई हैव अ सीक्वेंस लाइक दिस a b and c. फॉर ईच वैल्यू of this sequence हमारा जो loop है वो execute होगा. Let's take an example where we use the range function. I hope you have heard about the range function before. If not, we will cover this in a later part. So let's see how this program works. For I in range 3 to 5, which means आपका जो sequence है it will look like this. It does not include 5 because it will only go till n minus 1, does not include the last value. So as you see, यहाँ पर आपके पास दो values हैं 3 and 4, and for each value the value of I will be printed. Looking at another example where it starts with 5 and ends at 3. Now again this will not end at 3, it will end at n minus 1. So your sequence becomes this. So again, for each of these values, the value of I will be printed. So this is a simple example of how for loops work. I have created another video जहाँ पर हम लोग ने while loop and for loop in depth explain किए हैं. Looking at another example of a sequence, पहले हम लोग सिर्फ integers देख रहे थे. Right now we are looking at a complete list of strings. Let's say I want to print something like this. I want to print current fruit and ये चीज कॉमन होगी हर जगह and I will print each element like banana, apple and mango. How do we do this? First of all you need to remember जब हम लोग for loop यूज कर रहे हैं, जब हम लोग lists देख रहे हैं, lists always start from 0 and go till len minus 1. So इसका जो length है that is definitely 3, but the index always starts from 0, right? So for index in range, now this range is what? 0 1 2.
So did you understand this part? Why is it 0, 1, 2? Because it essentially means range of 3, which is this. So now it goes inside and prints current fruit, where the variable which will be printed is fruits at index. Now please note, index की जो value है that will range from 0, 1 and 2. So the first statement which will be printed is current fruit is fruits at 0, which is banana. Then we move on to the next index value, which is 1. Again, the next statement which will be printed is current fruit is fruits at 1, which is apple. So in this manner, we can print each and every element of the list. So let's look at the nested for loop now. Nested for loop का मतलब क्या होता है? हम लोग एक for loop के अंदर दूसरा for loop डाल रहे हैं. So let's look at this example जहां पर हम लोगों ने देखा I की वैल्यू है from 1 to 2 and यहाँ पर जो रेंज है that is moving on from 1 till 10. Again, the range function looks like this. ठीक है, so that is the reason इस रेंज का जो लिस्ट आएगा that is 1, 2 and इस रेंज का जो लिस्ट आएगा that will be 1 to 10. So for each of these values, k becomes I into j. So can you just guess what the output would be? For all the values of I where I is 1, हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 to लेके 10 तक, which means 1 से लेके 10, 1, 2, 3, 4 till 10. When I becomes 2, which is this, we will print the multiples of 2 for each of these elements, which is 2, 4, 6 and so on. So can you verify your output inside the program which you can write? Okay, so this was the example for nested for loop. Check out another example of for loop जिससे हम लोग factorial of a number calculate करने वाले हैं. If you remember, the factorial of number means the factorial of n is n into n minus 1, n minus 2 till the time reaches 1. तो basically इसका मतलब है अगर आप 6 factorial calculate कर रहे हो, it will look like this. Okay, so in order to create such a program जिससे आप कोई भी factorial जल्दी से calculate कर लो, you have to use a for loop. Let's see how. सबसे पहले हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे जिसका हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है एंड द अदर वेरिएबल इज जहां पर हम लोग फैक्टोरियल स्टोर करेंगे. सो रिमेंबर, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, आइदर यू हैव टू टेक एन इनपुट और यू हैव टू डिस्प्ले एन आउटपुट. यहाँ पर हम लोग इनपुट एंड आउटपुट दोनों वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक if the number is negative, positive और 0, क्योंकि 0 और 1 का जो factorial है that is always 1. Greater than 1 we have the formula, and for less than 0 there is no factorial. So why do we need to check if the number is negative, positive or 0? Is because it creates a good program. For example, if your user inputs -5, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो अटक गया एंड जस्ट डिस्प्लेज एन एरर. इट शुड हैव अ कंडीशन वेयर इट सेज कि इफ यू इनपुट अ नंबर लेस देन 0 यू डिस्प्ले समथिंग. सो दैट इज द रीजन वी आर चेकिंग इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. Okay, the first condition says if the number is less than 0 we do not have a factorial for it, so we just display that. We are creating another ELIF statement. If you remember, if ELIF से हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा conditions दे सकते हैं, that is the reason we chose ELIF statement. So if the number is 0,
we just directly print out that the factorial of 0 is 1. Now for all the other conditions, we need to use a for loop. So this comes inside the else statement, where we use for I in range 1 to num plus 1. So let's say कि मुझे 6 का factorial निकालना है. Then it should look like this. अगर मुझे इसकी range देखनी है, the sequence goes from 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर मुझे range function use करना होगा इसके लिए, what do I need to write? 1, not 6, but it will be 7. So essentially for each number, अगर मुझे 7 का calculate करना है, I have to add one more to it. So that is the reason we are writing 1, num plus 1. So next up is factorial. यहाँ पर हम लोग हमारा आंसर स्टोर करने वाले हैं. So it works like this. First of all, it will start off with 1. First value of factorial is 1. Then value of I will change to 2. Right? Then हम लोग अंदर जाएंगे. We will multiply 1 with 2. Why? Because we are again using the previous value of factorial to find out the next value. Now this becomes 2. Again, the value changes to 3. It goes inside the loop. Then it multiplies by 3. Now our value of factorial becomes 6 and the value of I becomes 4. Then again we multiply by 4, which becomes 24. Again the value of I changes to 5. We multiply by 5, which is 120. And finally we multiply by 6, which becomes 360. I hope you understood how a factorial of a number is calculated, but if you have any kind of doubts, I would suggest कि आप ये जो code है अपने compiler में लिखो and try to execute it. Another example of using a for loop could be finding the compound interest. So in order to find a compound interest for about 2 years, हम लोग ये calculations ऐसे करते हैं. We first find out for the first year. First year में आपका amount आएगा principal plus PRT into 100. And for second year, we just say our principal has become A dash, and then again, right? So this is the way how you calculate a compound interest. So for this program, we need 3 inputs, wherein we say हम लोगों को principal amount पता करना है, हम लोगों को rate पता करना है, as well as the time. Once we have these 3 inputs, we can use a for loop to calculate it for each of the years. So it will look something like this. For the first year, आप amount calculate करोगे. Let's say it is A1. Then for the second year, जो आप amount calculate करने वाले हो, उसके लिए आपका principal will become this value. Then you move on to the third year. इसका जो amount होगा, it will be the previous year's amount and so on. So if you see, you are adding this value, which is your simple interest, for each of the years to your main principal amount. So I would again suggest you to try out this program in your compiler so that you understand कि how this program actually works. So इससे हम लोगों को पता लगा कि for loop is actually a very useful thing in programming language. हम लोग for loops and while loops इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कोडिंग बार बार नहीं करनी पड़ती है. हम लोगों को हर एक ईयर के लिए बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है.
So we saw two types of statements. The first one was the conditional statement. Then we saw the iterations. The third type of statements are known as jump statements. तो जब भी हमें फॉर लूप या वाइल लूप को सडनली स्टॉप करना हो या मे बी एक आइट्रेशन को स्किप करना हो, वी यूज दीज जंप स्टेटमेंट्स. दे एक्चुअली हेल्प यू alter the flow of the loop. Like if you want to suddenly terminate a loop, or maybe you want to skip to the next part of the loop. These jump statements are of three types. The first is the break statement, second is continue statement, and the third is pass statement. Break statement, as the name suggests, it is used to break the loop or terminate the loop. Let's say I want to break this loop when I encounter the value of I. Whenever I mention this, suddenly आपका जो loop है वो stop हो जाएगा. So what should the output be for this loop? It would be S print होने वाला है, T print होने वाला है, R print होने वाला है, but as soon as it encounters I, this for loop will break and this will be your output. Next type of jump statement is the continue statement, which means it will skip all the remaining statements in the loop. Basically क्या होगा, जैसे ही आपने ये continue statement use किया, it will just go back to the top of the loop. So the output of this loop would be only N and T. If you want to see it in this manner, all the elements of the sequence are like this. So first element would be I. So जैसे ही I encounter हुआ, it says continue. It will not go here, it will just directly go to the start of the loop and the process will continue. So which means every time I is encountered, the loop will just reset and go back to the next value. And the third type of jump statement is the pass statement. It is actually kind of useless for your 10th and 11th, but because this statement actually does nothing and it is only used when you do not want to perform any action on the Python code. So this was all about iterations as well as the conditional statements. I hope you understood each and every part of it. If you have any kind of doubts, you can definitely put comment under this video. Hi, my name is Aakash Singh. I'm a graduate from IIT Bombay, currently working as a software engineer, and I hope you liked the video. So please do not forget to press the like button. You can comment if you have any doubts or any suggestions. You can share it among your friends. And also, please do not forget to subscribe to the channel. I'll be posting more videos soon. Till then, stay awesome. Bye-bye.